Hello and welcome to I'm the Best Mom Cover Page Cover Story. I hope you all are keeping well and staying healthy. On this special series on COVID 19, Wave 2 in Children, Road to Recovery, COVID 19 vaccine myths and facts, and today's session is COVID 19 in pregnancy. It's a pleasure to have Dr. Preetha Joshi, consultant neonatal cardiac intensivist from Kokilaben Hospital. Ma'am, thank you so much for coming here for the second time on this episode on the series of Cover Page Cover Story. And it's an honor to have Dr. Kanchan Malik today, Director, Mangalam Hospital, Women Disease Specialist, and author of Hello Bum, in conversation with Dr. Anuj Rastogi sir. When we are when we are talking about a mother's journey, and we'll get into the session, but let me start with the book written by Dr. Kanchan Malik. If you are a mother or going to be one, it is for you. Even more, if you are a woman, great for men too, to understand women better. It is good for you if you want to learn more about yourself, about love, about the deeper meaning of your existence, about the home, the true place of creation. Hello Bump tells how to communicate with the baby in the womb. So, are you ready to deep dive into the unique thought process of creating bonds, home talking, producing a virtue baby, and having a beautiful path for the baby from home to world? And what's better than if dads come along and strengthen the bond? Hold my hand. Imagine if your unborn baby could talk. This one does. Start slow. Put your feet up, relax, and you will be mesmerized by flow. Let's say loud, hello, Bum. And this is a message from the doctor. Says, pretty sure we all are smiling. Thank you. With this, I request Dr. Anuj Rastogi sir to take on the session with Dr. Kanchan Malik and Dr. Preetha Josiman. Thank you, Deepmanji. Before you were conceived, I wanted you. Before you were born, I loved you. Before you were here an hour, I would die for you. This is the miracle of mother's love. This is very rightly said by Maureen Hawken, who is a clinical psychologist. And in fact, motherhood is a journey of two words, present and the future, the mother and the baby. Pregnancy is a cherishable moment for the family. So it should be very nicely planned. I think it is something to be planned very nicely because it is not so simple. You start taking this casually because there are sometimes there are comorbidities present with the pregnancy, and sometimes few patients, because it is not a roller coaster ride. It is a roller coaster ride for few patients. They develop later on some problem of blood pressure, preeclampsia, eclampsia, and diabetes, obesity. There are so many problems along with that. And in this COVID-19 era, these problems become more important because these comorbidity, along with the comorbidity of COVID-19, that affects the pregnancy's outcome. तो हम सब चाहते हैं प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छी हो, स्मूथ हो, एंड जो बच्चा जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, दैट शुड बी दैट शुड बी जॉयस एंड मेमोरेबल इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इसी बारे में आज हम बात करेंगे. और मेरे साथ हैं डॉक्टर कंचन मलिक, जो मेरठ के अंदर बहुत जानी मानी ऑब्स्टिशियन है, डॉक्टर प्रीता जोशी, जो कोकिला बहन की कार्डिक इंटेंसिविस्ट, न्यूनेटल इंटेंसिविस्ट हैं. तो मैं इन दोनों से आज कोविड-19 और प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँ. गुड इवनिंग डॉक्टर कंचन. हेलो, गुड इवनिंग. मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक नया कपल है और इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, दे हैव अपॉर्चुनिटी आल्सो, तो इस समय उन्हें किस किस तरह प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? शुड दे टेक वैक्सीन फर्स्ट एंड देन दे शुड गो अहेड विद प्रेगनेंसी आफ्टर 2 months or so? What should be the planning for them? In my opinion, the slogan is, if you are safe, then all are safe. I mean, जब तक आप सब सेफ नहीं है, तो आप सेफ नहीं है. So in my opinion,
yes, they should take vaccine first, and after 6 to 8 weeks, when proper antibodies are formed, then they should plan for pregnancy. But anyhow, if they get pregnant, if she gets pregnant in between, that is, if she has taken first dose of vaccine and then she gets pregnant, then don't worry. She may take her second dose on a scheduled time. That has increased to 12 weeks now. So that would be even better for her, because those 12 weeks have been passed in the first trimester. So she may take her scheduled second dose also if she gets pregnant accidentally. So in my opinion, yes, she should take vaccine first and then should plan for pregnancy. तो आपने बताया पहले वो जो यंग कपल है पहले वो वैक्सीन ले ले और उसके 4 से 6 हफ्ते बाद दे शुड थिंक ऑफ Yes. प्रेगनेंसी और समहाउ अगर उन्होंने वैक्सीन ले ली और मीनवाइल अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो 6 वीक्स में वो दोबारा एक वैक्सीन ले ले और वैक्सीन सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वैक्सीन लेना सेफ है Yes. ओके अच्छा मैम अगर कोई लड़की जिसको जो जिसको कोविड हो गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड like azithromycin or doxycycline or ivermectin or SCQ or something like this और उसको ये unfold होता है during this treatment she is pregnant so what should be the approach should she continue this pregnancy or should she go for abortion No, she should continue the pregnancy. Her ultrasound should be done, and azithromycin and HCQ, though the HCQ and doxycycline are not very safe drugs during pregnancy, but she should continue the pregnancy. means 4-5 days का जो treatment लिया है वो ज़्यादा effect नहीं ज़्यादा करेगा effective नहीं होगा. और सपोज अगर उनके घर में किसी को कोविड हो गया है तो व्हाट शुड बी देयर अप्रोच टू कीप दिस प्रेग्नेंट लेडी अवे फ्रॉम दैट कोविड पेशेंट और वो अपना घर का काम करती रहें क्या अप्रोच होगी उसके लिए उसमें बेस्ट तो ये है कि अगर उनके पास कोई ऐसा घर है जहाँ पे वो अलग जा सकते हैं, तो वो आइसोलेट इतना हो जाए कि उस घर से अलग हो जाएं. If it is not possible, then she should isolate herself from the sick person, and all the COVID protocols should be followed. Like she should wear mask, she should not come in contact with that sick person, and things should be normal. राइट तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीन भी ले सकते हैं और घर में अगर कोविड पता चल गया है तो क्या उनके टेस्ट नहीं कराने चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं वो सिम्टोमेटिक हो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए जो ये सिम्टोमेटिक लेडी है या उसे सीधा आइसोलेट हो जाना चाहिए Of mother, then everyone should be tested. All the family members should be tested. ओके ओके एंड जो लेडीज जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है उन्हें और कोई खास ख्याल रखना चाहिए मतलब टाइमिंगली जैसे आप अपनी ऑब्स्टिशियन के यहाँ जाना आसान नहीं है तो क्या ऑनलाइन उनसे कंसल्ट करना चाहिए Yes, कैसे then in COVID time you should go virtual, and all the teleconsultations should be done, and uh, the all antenatal visits also should be tailored, like at 12 weeks, 20 weeks, 28 weeks, and 36 weeks. And the ultrasounds, they also should be clubbed with their antenatal visit. I mean, when she comes out for her antenatal visit, that time also she should get her ultrasound done, and she shouldn't come in and out again and again. ओके तो सेम टाइम पे इट इज ए क्लस्टर केयर उसी टाइम वो जब अल्ट्रासाउंड करा लें उसी समय ऑब्स्टिशियन से मिल लें या वर्चुअल मीटिंग कर लें उससे Yes. इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड कि कुछ कराया ही नहीं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे आगे चलते रहे Yes. Visits should be tailored, and we can space accordingly. ओके क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो उनको उनके अंदर कोविड होने के चांस ज्यादा हैं जनरल पॉपुलेशन से जो और एडल्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में What data says, they are equally susceptible, but they are more vulnerable because of their compromised immune response. So they are susceptible equal as general population, but they are more vulnerable. And it is more, my vulnerability increases in females where comorbidities are there, like in diabetes, hypertension, in blood disorders, or in heart diseases, or where
BMI is more, these patients are more prone to get COVID. Okay. तो जैसे कोविड की क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? You know, the Mool mantra is stay positive, stay calm, stay wise, stay alert. I mean to say that don't get panic. You know, never think what if it happens. Only always think even if it happens, what to do. So you keep increase your immunity by taking a good diet, high protein diet, good dry fruits, and keep yourself hydrated and take all uh, precautions, all COVID protocols like wash your hands thoroughly again and again, sanitize your hands, keep yourself away from sick person, and your mental stress should be less. More you stress, more your immunity decreases, and more there are chances of catching COVID. And your spiritual health also should be good. क्या आप इन जो एंटीनेटल केयर के साथ क्या आप इन लोगों को योगा भी रिकमेंड करेंगी मैम? Yes, that was I'm saying, that they should have their spiritual health also uplifted, like they should do all yoga and pranayam and breathing exercises, and they should indulge in their habits, like if they are indulged in reading, cooking, listening music. So they should de-stress yourself, and positivity is a very good thing, that it is freedom from fear. Okay, wonderful. To have a good mental health and physical health, you should indulge in yoga. ये clear cut मैडम का मैसेज है. And luckily at I am the best mom के प्लेटफॉर्म पे Wednesday and Saturday एक योगा ट्रेनर एंटीनेटल पोस्टनेटल योगा के पेशेंट्स के लिए जो लोग हैं उनको योगा की क्लास कराती हैं. She is an expert in antenatal and postnatal. Good. Miss Kaveri Panga. And what should be when you reach into the third trimester and if mother develop COVID, मतलब लास्ट के 3 महीने में अगर मदर को कोविड हो जाता है तो what should be the approach? Should that baby be delivered early या उसमें प्रीटर्म लेबर के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे? कब तक हम वेट कर सकते हैं? See, बहुत सारे केसेस में, more than 80% cases में, it is like just like a normal flu, and it vanishes within 7 to 9 days, and nothing to worry about. Only paracetamol suffices, so don't worry. And patient has to watch her temperature, her oxygen saturation regularly, and whenever she feels any dyspnea or breathlessness on 6-minute walking, or saturation is dipping, then she should consult her obstetrician and physician. She should immediately isolate herself. Self-isolation is necessary, but self-treatment is not advised. She should consult her doctor immediately. And daily fetal movement counting is a very good parameter to say that all is well inside. So no worry, this settles down and patient can deliver normally. जैसे 35 वीक्स एंड अबव है प्रेगनेंसी और ये कहते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ कोविड के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सेकंड वीक में होती है, तो क्या 35 वीक एंड अबव पेशेंट अगर वो कोविड हो गई है Dr. लड़की तो Anuj, you are not audible much. ओके मैं ये कह रहा हूँ मैम जो 35 वीक्स एंड अबव प्रेगनेंसी है और लड़की को कोविड हो गया है, मतलब जो एक्सपेक्टिंग मदर है उसको कोविड हो गया है, तो क्या उसको दिस विल बी राइट टाइम टू डिलीवर? अगर हम वेट करते हैं तो ये कहते हैं कि जितना भी कोविड खराब होता है जनरली सेकंड वीक में खराब होता है. If we carry forward it for the another week, maybe she may have more complication. It will not be wise to deliver that baby. You know, premature delivery in mild symptoms is not advisable. At 35 weeks, chances of prematurity are more. But if conditions are like this, then by giving dexamethasone, we may deliver the baby. But at 35 weeks, I don't advise that she should be delivered if she's having very, very mild symptoms. Okay.
No, but in first week, ma'am, symptoms are generally mild. It is those who get deterioration, they occur in the second week. और या जिसके साथ कोमॉर्बिडिटी है उन्हें डिलीवर करना चाहेंगे आप, या उन्हें भी वेट करने दीजिए? Yes, in comorbidities, yes, but again, if patient is having comorbidity, but she is well settled, her diabetes well controlled, her BP is well controlled, and is she's not having any symptoms, then also we may prolong the delivery date. ओके मैम, ओके। एंड जो जब हम एक बड़ा प्रॉब्लम आती है जो मैंने एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट फील करी है, जब लास्ट का टाइम होता है और आरटीपीसीआर उसको बताया जाता है लेडी को, तो आरटीपीसीआर में कई बार 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं और डिलीवरी का जो ऑप्टिमम टाइम है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगी जो आरटीपीसीआर है उसकी दो टेक्निकें, एक आरटीपीसीआर सीबी नाट या जीन एक्सपर्ट मेथड से करते हैं जिसकी 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, दैट इज लिटिल एक्सपेंसिव, बट जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो जाती है। मुझे लास्ट सीजन का याद है, एक पेशेंट का आरटीपीसीआर कराया गया, 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट आई, फिर 2-3 दिन वो लोग गए नहीं डॉक्टर के पास और बच्चा यूट्रस में ही सीरियस हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है तो आरटीपीसीआर एक बेस्ट मेथड से करा के डिलीवरी को जल्दी करने की कोशिश करें, या अपनी ऑब्स्टिशियन से रेगुलर टच में रहें उसको, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जब लीवर पेन शुरू नहीं होते हैं और टर्म पूरा हो जाता है तो लोग उस समय बड़े कंफ्यूज रहते हैं या वो ऑब्स्टिशियन को कांटेक्ट नहीं करते एंड दे डोंट नो हाउ लॉन्ग दे कैन वेट फॉर दिस डिलीवरी टू हैपन। इस बारे में आपकी क्या राय है मैम, जो जिनका फुल टर्म हो गया है, जिनके दिन पूरे हो गए, तो क्या उनको वेट कराया जा सकता है या उनको कितने दिन वेट कर सकते हैं, चाहे कोविड है या नहीं है अदरवाइज भी? No, then we may wait till her normal labor pains. और 1 week 2 week पोस्ट टर्म? No, not post-term, till her delivery date, 39 weeks. जिसके 39 वीक्स हो गए उसके बाद जैसे उसको पेन नहीं आया और वो आपके क्लिनिक पे आती है, उसको पेन है नहीं, आपने आरटीपीसीआर कराया, आरटीपीसीआर मान लो 2 दिन बाद रिपोर्ट आई नेगेटिव भी है, तो वो कई बार लोग जाते नहीं क्योंकि उसको पेन नहीं आता। तो कितने दिन वो 39 वीक कंप्लीट करके अपने घर पे वेट कर सकते हैं, पेन आए या ना आए, मीन्स आप कब डिलीवर करना चाहेंगे उसको? See, otherwise normal tenure of pregnancy is 40 weeks. So we can wait till 40 weeks also. ओके, मतलब 6-7 डेज तक। Yes. एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो पोस्ट टर्म हो जाते हैं, जिनका जो 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं और उनको पेन नहीं आता, तो वो कई बार घर पे ही बैठे रहते हैं और फिर लाइकर घटना शुरू हो जाता है एंड दे आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और उनको मेकोनियम पास हो गया और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका टाइम 40 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप कितना दिन वेट कर सकते हैं कि पेन आए या ना आए, क्योंकि वो Then पेन we shouldn't wait. 40 weeks is the deadline. And when she completes 40 weeks, then she should consult her obstetrician and induction of labor should be done, in my opinion. ओके। एंड अगर लेडी को सपोज कोविड पता चल गया कोविड है, तो क्या दे शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन ओनली और विल यू इंडेक्ट देम? No, she should be taken for normal delivery as other patients. But yes, extra precautions should be taken, like fetal monitoring should be continuous in other patients also. CTG is required, maternal monitoring should be very necessary, like respiratory rate, pulse rate, her oxygen saturation. And if everything is normal, patient is doing well, then she will deliver normally. And here comes the role of hypnobirthing. That is, by hypnotizing type thing, by virtually explaining the patient about labor, they deliver very well, and it acts like analgesia. I've explained it in Allobump also. So hypnobirthing has a very important role in COVID patients. अच्छा मैम, क्या जो मदर हैं जिनको कोविड हुआ है, तो पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिप्रेशन कुछ लेडीज में हो जाता है, तो उनमें डिप्रेशन के चांस ज्यादा हैं जिनको कोविड हुआ है, ऐसा कुछ देखा गया है? यस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो बेबी ब्लूज वैसे भी होते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ हॉर्मोन्स, पेशेंट में बेबी ब्लूज हो जाते हैं, और बिकॉज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, बिकॉज ऑफ बेबी केयर, एंड ऊपर से कोविड का स्ट्रेस
आइसोलेशन, लॉकडाउन, इमोशंस, सो इससे बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम एंजाइटी इंक्रीज हुई है। और कुछ लोगों में तो मैंने ये देखा कि उनको इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया कि उनका बेबी शावर नहीं हो पाया और उनका मैटरनिटी शूट नहीं हो पाया, ओह अच्छा। तो इसीलिए उन्हें बहुत डिप्रेशन हो गया कि ओके। उनका कमरा तैयार नहीं हुआ हॉस्पिटल में। अच्छा, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में जब भी कोविड हो जाता होगा तो एक मदर को एक एंजाइटी बिल्डअप हो जाती होगी, कोई बच्चे में डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, यस, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो खराब तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ है कोरिलेशन? उनको कॉन्जेनिटल एनोमलीज ज्यादा होंगी जिन्हें कोविड अभी है? तक तो जितना भी डेटा आया है उसमें तो बर्थ डिफेक्ट्स नहीं मेंशन किए गए हैं, तो बाकी डेटा इज टू स्मॉल टू कमेंट अपॉन, बट व्हाटएवर डेटा हैज कम इट सेज birth defects are not there and there is no teratogenic effect also. ओके। एंड जो बच्चे वेजाइनली बॉर्न होते हैं या वेजाइनली डिलीवर होते हैं, क्या उसके अंदर कोविड जा सकता है? नॉर्मल? No, because COVID does not get transferred from mother blood to umbilical cord and placenta, and it is not seen in amniotic fluid even. So, or not even in vaginal secretions. So, no. It is safe to deliver that way, मतलब बेबी सेफ है। Baby is absolutely safe. God is quite benign to the little angel, and he hasn't. Yes. जो ये विजिटर पॉलिसी कुछ नहीं होनी चाहिए ऐसे में, वैसे तो विजिटर पॉलिसी अदरवाइज भी होनी चाहिए, पर जो एक कोविड टाइम चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर एक पेशेंट के साथ बहुत सारे लोगों का जाना, और फिर आपके यहाँ तो जब बेबी डिलीवर हो गया तो बहुत सारे लोग उसे ब्लेस करने आते हैं, तो व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, स्पेशली इन दिस कोविड? Yes, I do agree. जब भी पेशेंट को एडमिट करें उसी समय ही उसको एक फर्म मैसेज जाना चाहिए कि विजिटर शुड बी लिमिटेड टू वन सपोर्ट पर्सन ओनली, and support through video may also be done. If she wants to talk to another persons, then she may talk through video. And in my opinion, the best thing is that the visitor who will be a support person and will be staying together for 24 or 48 hours, then he must be given a wristband. So whenever he comes, he should show the wristband that he is the only person who is the support person. So visitors policy should be strictly followed. जो आप कहना चाह रही हैं इसका मतलब जो लेडी जो अब तक कोविड से बची हुई थी वो कोविड से इन्फेक्ट हो सकती है और उसके बच्चे को भी कोविड हो सकता है अगर वहाँ ज्यादा रिश्तेदार या ज्यादा फ्रेंड्स वहाँ पे मिलने जाएंगे, और आपने बताया कि एक बैंड लग जाए जो उसका सपोर्टर है जो 24 से 48 घंटे उसके साथ रहने वाला है, जिससे कि वहाँ पे और लोग This ना occurred to me कि ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा है. I am not doing, but I am thinking of doing it. This is good. बट ये कर देना चाहिए मैम, ये सभी हाँ, लोग। this is a good thing. This occurred to me कि ऐसा कर सकते हैं. तो yes. देखिए सिर्फ मास्क लगाने से बच्चों के इतने सारे वायरल इन्फेक्शन कम हो गए, हम जो ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा का एक्सेलरेशन Right. ज्यादा देखा करते थे चेंज ऑफ वेदर में, इस बार नहीं है क्योंकि ये मास्क लगा के रह रहे हैं लोग, ज्यादा मिल नहीं रहे हैं आपस में, तो ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। तो ये लोगों को ये समझना होगा कि अननेसेसरी ऐसे जाने से, और ये आप अपनी ब्लेसिंग्स अदरवाइज भेज सकते हैं आजकल थ्रू कोरियर भेज सकते हैं फ्लावर्स, या मैं तो कहूँगा बच्चों को तो टॉयज भेजने चाहिए। If you really love them, you send them some good gifts, and आप फिजिकली प्रेजेंस ना शो करने जाएं बिकॉज उससे कोरोना स्प्रेड होने का या और इन्फेक्शन स्प्रेड होने का डर रहता है। अब मैं डॉक्टर कंचन मलिक ने बेबी डिलीवर कर दिया है और आपके पास दे दिया है, और मदर कोविड है, अब उसे कैसे रखना है बेबी को, थोड़ा आप गाइड करें। क्या मदर इसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है? मदर कोविड है और बच्चा डिलीवर हुआ, मैडम ने बताया कि बच्चे में कोविड जाने के चांस मदर से डिलीवरी के दौरान नहीं है, तो आप मुझे बताइए मदर कोविड है और बच्चा जो है सेफ है अभी तक, तो अब आपको इस बच्चे की क्या प्लानिंग होगी? क्या इसको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा? कराएंगी तो कब कराएंगी? कैसे इसका प्लान करेंगे? Yeah, so basically, once the mother को COVID हुआ है, then the chances, like we said, direct transmission का chances कम है, जो placenta के through होता है. The more common chance, what you were just talking about, is when visitors come. We call it horizontal transmission.
So vertical transmission is from the mother to the baby through placenta, and horizontal is when it happens from other relatives. So it's very important to prevent that, because data shows that most of the infection in newborn is caused not really when the child is in hospital, but it's actually when they go home and then they come back with COVID. So from relatives, especially now in every household, there is somebody who's positive. Second thing we discussed about is about breastfeeding. So basically, breastfeeding can be given safely. There is a lot of doubt कि whether breast milk के through COVID in virus comes through, but there is again उसके बारे में भी data strong नहीं है. We have hospitals here which are completely dealing with COVID positive mothers. And unke data maybe there is no direct transmission through breast milk. So breastfeeding can be done, and can be done immediately after birth also. So in fact, we would encourage that we should do that. The only thing is mother mask pehne, and when she's breastfeeding, she takes care of all her hand hygiene, and she takes care not to have the horizontal transmission to the baby. So breastfeeding is safe. Yeah. मीन्स उसको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, ब्रेस्ट को वॉश करना चाहिए, डबल मास्क लगाना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद बच्चे को अपने साथ रखना या सेपरेट कर देना? No, so after giving the milk, as long as she's wearing a mask, it's okay. See, if she's coughing a lot, then yes, a healthy caretaker is good. So अगर घर में कोई और जो जिनको कोविड नहीं हुआ या फिर हेल्थी है, तो वो that person can take the child after the feeding, not directly. If the mother is not having symptoms, like so sometimes you have asymptomatic, like जब भी हमने टेस्ट कराया डिलीवरी के पहले पॉजिटिव आया, बट मदर को सिम्टम्स नहीं है, in that case there's no need to separate the baby and mother. Only if mother is sick you have to separate. ओके. एंड एक ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडी है उसको वैक्सीन दी जा सकती है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर? Yeah. So as per the recommendation now of the Ministry of Family Welfare and Health, we can start vaccinating lactating mothers. मतलब जो breastfeeding कर रहे हैं, वो mothers we can continue with vaccination, because again side effect has not been proven. There is no data for that. न्यू बॉर्न के लिए कोविड है या नहीं है, क्या बेस्ट टेस्ट है, कब करना चाहिए, और कब अगर नेगेटिव आए तो कब रिपीट करना चाहिए? Sorry? न्यू बॉर्न के लिए उसको कोविड है या नहीं है, कब टेस्ट करना चाहिए, और उसको अगर वो टेस्ट नेगेटिव आए तो दोबारा कब रिपीट करना होगा? व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर देम? So the best test is always RT-PCR. Not doing antigen, antibodies, etc. So do the RT-PCR for the baby, if possible, in the first 24 hours. Agar positive आए तो भी if the baby is fine, no need to repeat the test. So there is no recommendation for second test. If baby has come positive, so we do close observation of the baby. We would ideally like to observe the baby at least for 3 to 4 days. If baby is fine, otherwise we send the baby home and we continue with online consults and tell them to watch that the baby is taking feeds लेने में problem नहीं है, and other common things that happen. Because again, newborn COVID, like I said, is very, very rare. So and even if they get COVID positive, they are not generally presenting with symptoms. Even in Bombay itself, we have reported only a few cases, around 20 to 30% in newborns who have some respiratory, breathing fast or some pneumonia, which is also not directly being related to COVID. तो एक ना मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में आजकल काफी बात हो रही है बच्चों के अंदर जिन्हें कोविड हो चुका है. उसके अंदर कुछ बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज से ऑटोइम्यून फिनोमेना ट्रिगर हो जाता है, उनके सारे ऑर्गन गड़बड़ होने लगते हैं. क्या जो एंटीबॉडीज अगर मदर को कोविड हुआ हुआ है वो एंटीबॉडी बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो गई है, तो क्या उनको भी मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कुछ बच्चों को हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या वार्निंग सिम्टम है जो समय रहते वो एक प्रॉपर जगह चले जाए? तो ये लकीली जैसे डॉक्टर कंचन ने भी बोला था, like it's luckily we are that it's such a way God has not caused this syndrome so much in newborn babies. So all over the world there is very few reported cases जिसमें ये multi system means many
ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स सभी इन्वॉल्व हो गए कोविड के बाद, व्हेन दे गेट अफेक्टेड. That is very rare in newborn, though there are a few cases reported. In Bombay itself we have seen around 20 cases, but only 3 of them were very severe. Now in that case, the common symptom isme the babies generally have, they are dull, they are not taking feeds on time, okay, they look sick. Any of the things which baby normal baseline behavior nahi hai baby ka, and we know that the family में किसी को कोविड हुआ है या फिर मदर को कोविड हुआ था, in that case bring into the doctor early, bring into your pediatrician as early as possible. ओके. सो एंड अगर किसी मदर को रेमडेसिविर दी जा रही है और बच्चा डिलीवर हुआ है तो क्या वो फीड करा सकती है? रेमडेसिविर बच्चे को नुकसान देगी? Yeah, so remdesivir is safe in lactating mothers, so we can give remdesivir. राइट. तो मेन टेक होम मैसेज ये है कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसको वैक्सीन दी जा सकती है और देनी ही चाहिए, क्योंकि आगे वो फिर कोविड से बचेगी. सेकंड, वो अगर कोविड है भी तो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, बट मास्क लगा के, हैंड हाइजीन मेंटेन करके. एंड बच्चे को अपने साथ भी रख सकती हैं अगर उनको कॉफ नहीं है और मास्क लगाए हुए हैं, और नहीं तो 6 फीट डिस्टेंस पे एक हेल्दी अटेंडेंट के साथ, हेल्दी सपोर्टर के साथ रख सकती हैं. दैट इज वी शुड नो. एंड अभी न्यूबॉर्न को तो वैक्सीन नहीं देते हैं. अभी रिसर्च चल रही है एंड 2 ईयर एंड अबव पे रिसर्च चल रही है. मे बी इन फ्यू मंथ्स, 4, 5, 6 months, we will start giving anti-COVID vaccine to them also. Thank you, Dr. Preeta. Deepmanji, you have some question for Dr. Preeta and Dr. Kanchan? Yeah, absolutely, sir. There are a couple of questions from the audience. One of the question is, I was detected COVID positive on 31st of March. I have completely recovered now and in my 3rd month of pregnancy. Should I take vaccination? If yes, then when should I take it? We strongly recommend that it was when, I'm sorry, when she was We COVID got positive on 31st of March. So almost so a 50 if she days. has to take vaccine, then 3 months after her recovery, she will take COVID vaccine. And by that time, I'm very, very sure that Government of India will also show green flag to this vaccine. So after 3 months of her recovery, she will take the first vaccine. I think on the similar line, there is another question with the 2.5 months pregnant and I was COVID positive 20 days back. So can I take vaccination during pregnancy? Same answer is same, that after 3 months of her recovery, right, she will take the vaccine. And there are similar set of questions. Like there is another question. My wife got tested positive 20 days back and she is in the 3rd trimester. Now she is okay, but dry cough is still there and no other symptoms. So what is the advice? So she should take her normal antenatal checkup and keep doing exercise, yoga, and keep your morale high and uplift your immune system. That's all. Now you have got good antibodies, so nothing to worry. And with the similar extension of that question, also, can she get vaccine now or it can be only after the delivery? No. If she had COVID, then she must take vaccine after 3 months of her recovery, not after delivery. And I am very sure that Government of India will approve this thing, and the pregnant women will also be taking advantage of taking vaccine very soon. Okay, and thank you, ma'am. And there is another question. I was COVID positive from last 20 days back, but now I'm recovered. The person has recovered. It is my 7th week. Now, does it affect my baby? No, it will not, because I'm again saying that God is good. Benign enough to the little one, to little angel, that this COVID doesn't affect the baby in the womb.
Ma'am, this is another question. The question is, one 7-month pregnant woman suffering from COVID pneumonia and on ventilator, is it possible that her delivery may be possible for saving the child? See, she should take. Dr. Anuj will be giving answer of it more, but she should take steroid shots, and then, in my opinion, yes, to save the mother, baby should be delivered. If No, baby can be delivered, and if mother is on ventilator, we will start with if baby is delivered preterm, then we should give a dexamethasone course for 2 days. and it is my question, then the magnesium sulfate should also be given for neuroprotection. Neuroprotective. What is your call on Preeta Joshi on the magnesium sulfate to these mother? Yeah, so for any mother who is pregnant and expected preterm, which is in the range of 32 weeks, the magnesium sulfate is recommended. Yes. So Yeah. magnesium But again, sulfate how is- stable the mother is, because sometimes it causes hypotension, like the blood pressure drops. So in that situation, you have to see if this mother is on ventilator and very sick. You'll have to take a guarded call on that. This Then- mother is on the ventilator, no? We said COVID Yes, ma'am. pneumonia and on the So magnesium sulfate is a very neuroprotective, but they should not have renal failure and hypotension. yeah. So if a patient is serious with COVID and is about to deliver, they should be given magnesium sulfate. And this baby will have a good chance of survival. So for both mother and baby, not just to save mother but also to save the baby, we should deliver this mother early, because at 7 months the chances of this baby doing well is also high. The chance of baby having COVID is rare. So as soon as we can deliver before the mother becomes more sick, it's good if we can do it. Yeah. राइट बिकॉज जो उसमें अगर उसकी वो फेज चल रही है डी डायमर्स वगैरह साइटोकाइन स्टॉर्म हो रही है तो इट इज बेटर टू डिलीवर दिस बेबी बिकॉज अदरवाइज मदर और डिटोरिएट कर सकती है एंड मदर हैज टू पुश विद लॉट ऑफ मेडिसिन व्हिच indirectly or will affect on the outcome. all the other parameters. Right. Thank you, Dr. Preetha and Dr. Kanchan Malik ma'am and Dr. Anuj Rastogi sir. We are getting some more question even after the session, and there is a beautiful question has come. Dr. Kanchan, how can we reach you? What time you are available in clinic? So I'm not announcing it over here, but I'm sure people are looking at the pregnant women or maybe anybody. They're all big fan of yours in the territory, so people are looking forward for a quick appointment from you. So I'm available. I'm available at my clinic from these days the OPDs are squeezed, so I'm sitting for very less time, and prior appointments are taken. So they may take my number from Google and they may take prior appointment. Yeah, thank you, Dr. Kanchan. And Dr. Anuj Rastogi, sir, any other insight you would like to give to all the viewers? There are a lot of What sir, I you will are mute. what I will recommend to the families of visitor policy in the hospital. It was not very happy thing in the earlier days also, but this time also when the COVID era is going on, and we all are troubled when we go inside the room and we see there are many people who are sitting there or standing there. They come just for nothing, and it is in this era, if you are treating a child with pneumonia or something else, he might had another comorbidity in form of the COVID. So I keep telling to the families, and this visitor policy should be, it is not in the hand of hospital to expedite it. Family should understand it. जो लोग देखने जाते हैं रिलेटिव्स को अपने उन्हें समझना चाहिए ये समय नहीं है वहाँ भीड़ लगाने का और एक पहले ही पेशेंट जो बीमार है उसको एक और नई बीमारी गिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं डॉक्टर प्रीता आपकी क्या कॉल है आप तो बहुत सीरियस पेशेंट देखती We हैं can't hear you, Anuj. डॉक्टर प्रीता आप कोकिलाबेन में बहुत सीरियस मरीज देखती हैं आपके वहाँ भी विजिटर्स पॉलिसी क्या है लोग आते हैं बहुत जब वो सही हो जाते हैं तो उनके रूम में बहुत लोग आते हैं No. So we are actually very, very strict on visiting. There is no visitors allowed at all post delivery now. So at this point, we are not allowing anybody inside.
They can send photographs, they can do all that. Now there are so many virtual platforms. So I don't think it's important. जैसे आपने बताया, it is, we have so many options now. We don't need to increase the risk. Not only to their patient, we are increasing risk to all the other patients. So the policy is very strict. In case of this, we are allowing one caretaker, which might be the mother, father, mother's, mother-in-law, whatever, the pregnant ladies, but nobody else other than the husband. Yeah. Right. And even if the baby is admitted in the ICU, so sometimes if the mother is sick, I think we didn't cover that, but if the mother is sick, we do need to observe the baby somewhere, because there is only the husband who is allowed inside. So in that case, till the baby's tests come back, until we find a healthy caretaker, we keep the baby isolated in a COVID specific area, isolation area in the ICU or in the step down. And then once we train the caretaker, we actually advise, if the mother is sick, to take the baby home early. Once we train the caretaker can take the baby home and manage the baby at home. Because mother is sometimes in the ICU, right? So that also has to be considered. तो जो हमारे लोग हैं उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंडिया और अमेरिका जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत फ़र्क है। इंडिया में एरिया बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन मेंटेन ए कोविड आईसीयू, कोविड ओपीडी, कोविड हॉस्पिटल, बट इन इंडिया इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। जैसे आजकल बेड की भी शॉर्टेज हो रही थी। अभी मैं गाइडलाइन पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर वो फीवर वाले बच्चों के लिए अलग चैम्बर बन गया और नॉन फीवर वालों के लिए अलग चैम्बर बन गया। वेटिंग लॉन्च भी दोनों की अलग अलग हुई। वो इंडिया के अंदर नहीं है पॉसिबल। आप एक क्लिनिक के अंदर आप यू कांट क्रिएट 2 चैम्बर्स, यू कांट क्रिएट 2 वेटिंग हॉल्स। इट इज बेटर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो एक बहुत जरूरी आदमी है वही चला जाए, रादर देन यू आर गोइंग इन ए क्राउड और यू इन मल्टीपल्स। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। So this is my request and submission to all of you, and thank you, The Dr. switching of the person should also not be allowed, that एक आ रहा है और एक जा रहा है. Only one supporting person should be there, and that person should remain there and will discharge the patient. Right, ma'am, right. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Preeta. Thank you, Deepmanji. And it was a nice Thank session. you. Thank you so you. much. Thank Thank you. you. So this is where this is how we have been taking session for the prenatal session by Kaveri Banga, precisely on. Simple. We got the answer. Very good. Pat yourself. You did better than last time. Though that one was really funny. जिसका answer क्या था? The answer is expand your lungs. Breathe out. 3. One last time. Breathe in. Open up wide. Left. एक आखिरी बार right. अब जितना हो सके उतना करेंगे। अब देखो इससे भी थोड़ा पीछे जा सकते हैं। So on a regular basis, as Dr. Anuj sir said, we have been doing it for more than a year now, and the yoga is also extended for children in a playway method. This is amazing. So we have been inviting, and there are more than 2,400 children have learned so far yoga in a playway method from Kaveri Banga under I'm the Best Mom. And this is a great pleasure to share with you. We have collaborated to take the journey forward. We have been working a lot to reach out to moms to be children with a very holistic manner. And with the Indian Chamber of Commerce, Women Entrepreneurship, and also so tomorrow onwards, we are starting this 3-week-long conclave where we have collaborated with India Chamber of Commerce, Empowering India, Women Entrepreneurship Committee. We have also included Parisar Asa, the 37 years old non-profit working in the field of education and mental health from Mumbai. Then Chiranjeevi Clinic from Pune. Then we are also collaborated with CCAW Delhi.
this is a journey which we have to cross, and we require all your support so that we can reach out to the moms and their family member and provide the holistic way of reaching uh, and offering the best possible solution. And when we were presenting this, even the Indian Liver uh, Association came forward to be a part of this. So with this, we are starting this 3-week long program, and we are always grateful to all the attendees and the panelists who have come to I'm the Best Mom in last 1 year time. We are going to release the new website after 2 days. So Sunday, we are looking forward to have the new website in place. This is a very, very interactive website where you will be able to access all the information. And we are very proud to say today we are completing the 16th episode of Cover Page Cover Story, which has reached to millions of parents across India, because after the session we also reach out to them, and it's been well appreciated. So thank you so much, the panelists. And today's session precisely, I'm very, very thankful to Dr. Kanchan Malik ma'am and Dr. Preetha Joshi ma'am. Thank you so much for your contribution to all those who are requiring your need. Thank Dr. you. Anuj Rastogi, sir. Thank you, Deepmani. And it's time to say bye-bye. Good evening, Preeta ji, and good evening, ma'am. Thank you so much.